and participants. Myself, Mrs. Taru Mara, welcome you all to the third day of webinar on climatology and meteorology on behalf of Pari Simant Engineering. For today's, I would like to invite Dr. Narendra Singh, the scientist in Atmospheric Science Division, Aries, Nainital, Uttarakhand. He will be delivering his expert lecture on observations and climate change Himalayan perspective. Meanwhile, if there is any query from the participant side, kindly put your queries in the chat section. All queries will be taken after the session. Dr. Narendra, sir, may we start the session? So may we start the session, please? Sir, am I audible to you? Hello. Hello, sir. Hello, sir. Yes, sir. Dr. Narendra Singh, sir, am I audible to you? हेलो मैम, अभी आ रही है आपकी आवाज? Okay, sir. So can we start the session? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Please. sir. Please proceed, sir. Thank you. हाँ, मेरी आवाज आ रही है मैम? हेलो। Yes, sir. आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, जी। ठीक। ओके, तो मैं शेयर करता हूँ इसको। मैम, स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. दिख रही है। It is visible, perfectly visible. जी। ओके. So once again, a very good morning to all of you, including people like Negi ji and ma'am who have been there for whole day. So today I'll be discussing more on observations and climate change. कितने पार्टिसिपेंट हैं मैम? अभी मतलब शुरू से जितने लोग हैं वो है ना सारे? 9 हेलो. in WebEx and around 20 to 25 in YouTube. ठीक. Okay, that's great. Okay, so let us start with today's talk now. So observations and climate change. जैसा कि हमने फर्स्ट डे भी डिस्कस किया था कि कितना इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट से रिलेटेड इश्यूज आज अगर हम बात करें. So here, whosoever are able to see this screen, you can see background a very beautiful Himalayan snow-covered mountain, and in the foreground you can see some forest land of mountain with forest area. So these are the observations while we this graph is basically from the area is around Ramgarh. From Ramgarh, if we see while going to Devasthal or Mukteshwar, you will see the view like this. So this is, in summertime, you can see how beautiful Himalaya looks. But then the question is, will this beauty prevail throughout, our life or the generations yet to come? So this is a big question when we talk about the climate change issues and the particularly Himalayan perspective, since we are living in the Himalayas. And if you speak to our ancestors or say our grandparents, they will simply tell that things are not the same as they saw in their childhood days. I think this all of us will appreciate this point and try to understand this, that how correct they are, able to say tell you the story if we talk today. So climate and climate change, I'll try to give an overview of that.
Then, of course, what is the schematic of this climate system? How many components are there in the climate system, which are essentially required to be understood, so that we can connect all subjects together, because climate change is not an individual entity. It is affecting all spheres of the life in particular. And in general, if you say that it is not only sort of affecting only living things, but of course even non-living things are also getting affected with these the issues of climate change, like monuments of historical monuments all over the globe, which are facing the sort of acid rain, and they are trying to destroy the sculptures and many other great creations of artistic importance, or say geological importance or archaeological importance. They are also getting affected with all sort of the issues which have been raised by or created by man-made activities in general. So then the science of climate change, that how do we deal with this issue, whether what are the responsible factors, and how do we think about the climate change, what are the basics of climate change. So I'll be a little bit focusing on that as well. Of course, some of the issues we have discussed in the very first lecture. And then, of course, global warming trends. What are the global warming trends today, if we see? And then observational data, which is available for the climate related study or studies or climate change studies, particularly in the context of Himalayan region. So when we talk about climate, so on very first day, as we discussed, that climate is long-term aggregate weather, you can say. If we try to average the weather for long term, say 30 years, 40 years, or 50 years, and then we try to say the change right from the first year to the end year, then we'll say, okay, something has changed from the beginning to the end of, or the by the end of 50 years. And will be, term, it will be calling it as a point or a phenomenon that something has changed. It is temperature or the rainfall, or whatever weather activities, for example thunderstorms, or the frequency of occurrence of a thunderstorm. All these issues we relate if very long periods of time, from the beginning and to the end of a fixed period, or say 30 years to 50 years of the period, then we'll say, okay, something has changed, which was measurable and we, or visible, or we could see it or we could feel it, but it has changed by the over a period of longer time. So we call it change in that particular parameter, and if that parameter belongs to climate, so we call it climate change. So in general, we what we call climate is what you expect, and weather is what you get. I mean, whatever, for example, if the sky is cloudy today, so we can say that no, weather is very cold and it's cloudy. So it means it is the present scenario, and we are able to see it, and we can say that, okay, weather is little harsh or little bad today, or it is not pleasant today, we can say. But what can we say about after 30 years of the same day? So that will be sort of a parameter that will belong to climate, and we call it climate. So in simple language, we can say that long term average weather is climate. If we take the average of weather for long term, say about 30 years or so, we'll say it a climate or climatic conditions. So whatever measurable parameters, measurable parameters are mainly your temperature, minimum temperature, maximum temperature, then rainfall, and then frequency of thunderstorms, rainy days, all sort of these parameters that we can see, the frequency of occurrences, these comes under climate. So simply the change in measurable parameters over a long period of time is simply climate change. And now, why the climate change is happening, those are the factors that we have to understand or recognize, or try to appreciate them, that what are the basic causes and how the things are changing globally. So if you see globally, averaged carbon dioxide
in the atmosphere. So over the period of, say, this is starting from 1962 up to 2010. Every 10 years, this data is actually updated. So, and this is updated by agency called Intergovernmental Panel for Climate Change, which was established in 1988 after a lot of greenhouse emissions were observed globally. Same concentration as I think 2 days ago, if I remember, or if maybe in the same lecture I have told that over the period of 200 years, the carbon dioxide has increased by 40%, and this 40% increase in the carbon dioxide has led to significant warming of the globe that we call global warming. So now if you see the trends here, this is a line. You can see that in 1960, the carbon dioxide was the basic level, if you say, it was around less than 320 parts per million. I think parts per million or parts per billion we have already discussed in the first lecture when we were trying to explain the composition of the atmosphere. So it was less than 320 ppm, parts per million. But slowly, if you see that every after 10 years, there is some rise. It has come, say it was around 300 ppb, it has gone up to 340 ppm, sorry, not ppb. And then this consistent, then of course the observations started, I mean, from three different sites. One is Mauna Loa, and then one site is at South Pole, Antarctica, and some sort of observations of from global network of National Oceanic and Atmospheric Administration of United States. They also have some observations. So these three observations clubbed together are, presented in the on this platform. So if you see that when there are regular observations, so you can see that a peak and dip. So peak and dip are basically daytime and nighttime. In nighttime, if you see nighttime, you will be getting a peak in the CO2 observation. In daytime, you will be getting a dip, because in the daytime when plants synthesize their food from in the presence of sunlight, so they absorb a lot of carbon dioxide. So that's why this dip comes in the daytime. So daytime carbon dioxide level goes down, but in the nighttime again increases when plants do not eat up this carbon dioxide. So this is the this you can see in this curve. So the point here is the importance here is just to show you that how CO2 is the most abundant or significant, or say dominant greenhouse gas, which is uh, continuously increasing the temperature of the globe. So if you see in that sense, so the temperature, the level of CO2 is consistently increasing, and it has reached up to by 2010. And the next 10 years of data is about to be updated by IPCC in 2021. So you can see that it has crossed around 400, starting from, say, 300, and within, say, 60 and 40, 50 years. In 50 years, it has crossed 100 ppm extra CO2 level in the atmosphere. So you can imagine that if it goes on increasing at the same rate, and rate also you can see here, in between there are very high peaks, like in the era of 2000, you can see that there was very high increase. This is rate of change of CO2. So rate of change, if there is positive change, means increasing. So in the decade of 2000, CO2 increased very fast per year. So this is the rate, and this is actual values. So if you see that still there is consistency or sort of increasing trend, then of course it came down when people became aware and tried to global scientific community tried to give an emphasis along with the policy makers and the politicians that this is actually going to be a very serious issue in the centuries to come. And then people started thinking about this, and then you can see there was a Kyoto Protocol, where they decided in 1992, I think,
that United Nations Environmental Program, that we have to reduce the greenhouse gases to the significant level so that we can have a control uh, emission and protect the environment. So these are the trends of carbon dioxide. Then another greenhouse gas is methane. So methane is also showing increasing trend. If you see, this is part per billion. This is in part per million. This is part per million. So whatever greenhouse gases are present in the atmosphere, they are consistently increasing. This is actually the point, just to make you kind of understanding in the very beginning, that I mean, how these nitrous oxide, if you see here, N2O, this is also consistently increasing, because this is also a precursor gas as well as greenhouse gas, to some extent you can say, because it takes part in the formation of ozone like species in the atmosphere. Any oxides of nitrogen, they are a precursor gases basically for the formation of ozone. And as I told you in the very beginning, that ozone in the troposphere is excess ozone in the troposphere is bad for everything, for health, for vegetation, for crop, agriculture, everything. And whereas the ozone in the stratosphere is good ozone which protects us from ultraviolet radiation. So the point here is that if you see the global map, and these are not the observations from India or Europe or say Indian subcontinent and America, wherever the available stations are there, or some of the background stations are there, there you can see that there is actually increase, consistent increase, or steep slope. You can see that it is showing a rising trend of all sort of these greenhouse gases, which are basically giving or helping, or supporting the rise of temperature, global rise of the temperature. So now this is a very famous quote from IPCC 2007 report, which was the, if you remember, Dr. R.K. Pachori, who also belonged from Himalayan region, somewhere around Uttarakhand. He was chair of this WG3 group, who actually, taking all sort of available observations and works from the global science community and then compiled together. And they concluded that whatever global warming is taking place, or whatever rise in the temperature is being seen, and whatever adverse things are happening to the environment, are basically because of the man made. जो भी हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी पर्यावरण को खत्म करने से संबंधित चीजें हो, या धरती का जो तापमान बढ़ रहा है उससे संबंधित चीजें हो, उन्होंने इस रिपोर्ट में ये कंक्लूजन निकाला कि ये सब मानव जनित गतिविधियों की वजह से है. सो द फर्स्ट टाइम इट वाज आइडेंटिफाइड that everything which is happening on the surface of the earth, or even if we talk about the ozone hole, all these detrimental effects were being created by the man-made activities, and we call them the effect of anthropogenic activities. उनको हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मानव जनित गतिविधियां, जिसको हम तथाकथित विकास बोलो, या जो भी बोलते हैं हम, कि हमने इतनी तरक्की कर ली है, ये कर लिया, वो कर लिया है, whether it is industrial emission, industrial development, or industrial revolution, or means usage of the chemicals and different fertilizers in the agricultural sector, all sort of chemicals which are being produced, used, or emitted in the atmosphere in any form, whether solid, liquid, or gaseous form, they are ultimately harming the atmosphere in general, and then it is affecting all sort of the spheres on the surface of the earth. So this statement says that warming of the climate system. अब जो भी हमारा system है, climate system, basically it is not one thing. It is not biosphere. It is not geosphere. It is not atmosphere. Climate system actually takes into account all sort of connected spheres. जो भी आपका चाहे वो ग्लेशियर्स हो, या आपके फॉरेस्ट हो, या बायोटिक लाइफ हो, या एक्वेटिक लाइफ हो, जो भी है, सारी चीजों का एक क्लाइमेट सिस्टम इन सबको मिला के बनता है. तो द रिपोर्ट से, और इस रिपोर्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि दिस टीम IPCC was awarded Nobel Prize
for this sort of discovery and these conclusions. So warming of the climate system is unequivocal. तो पहले 80s में काफी डिबेट था इस पे कि कुछ लोग कहते थे नहीं नहीं देयर इज नो क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, ये तो एक साइंटिस्ट लोगों का एक अपना एक तरह से ओपिनियन है या अफवाह है, इट्स नॉट हैपनिंग. बट देन द फैक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड in 2007 that climate now it is widely accepted by everyone that globe is warming, climate system is warming, and the warming of the climate system is unequivocal, means it is everywhere and realized by everyone and present everywhere, so it cannot be avoided, as is now evident from observations. और पता कैसे चला? ऑब्जर्वेशंस के थ्रू पता चला of increase in global average air uh, and ocean temperatures. Observations of increase in global average air and अब जितने भी हमने ऑब्जर्वेशंस किए ग्लोबली उनसे पता चला, और ओशन का जो टेम्परेचर है वहां से पता चला इन सब ऑब्जर्वेशंस के लिए, मतलब एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस और ओशन के ऊपर जो भी टेम्परेचर के ऑब्जर्वेशंस लिए उनसे हम लोग ये कंक्लूजन पर पहुंच पाए कि ग्लोब इज वार्मिंग एंड वाइड स्प्रेड मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड आइस एंड राइजिंग ग्लोबल एवरेज सी लेवल. और उनके जो मतलब एक तरह से रिजल्ट देखें वो ये महसूस किया गया, इसके भी ऑब्जर्वेशन हुए कि आपका बर्फ पिघल रही है बहुत तेजी से. चाहे पोल्स की बात करें हम कि पोल्स में जितने भी आइस शेल्स थे वो ब्रेक हो के टूट के गिर रहे हैं. जैसा कहा था हमने कि पिछले 200 सालों में 20 सेंटीमीटर तक सी लेवल राइज हो गया है. तो वो कहाँ से आ रहा है पानी? वही है जो आपका पोल्स पे जमा बर्फ है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के प्रोसेस में जो बनी हुई वो टूट टूट कर गिरने लगे हैं. बड़े बड़े आइस शेल्स टूट रहे हैं, आइसबर्ग्स टूट रहे हैं. सो विच इज कई बार आप इंग्लिश मूवीज देखते हो ये सब क्लाइमेट से रिलेटेड, तो उसमें दिखाते हैं कि आइस एज आ गई और आइस एज के बाद फिर ये अभी वार्मिंग एज है, ये टूट रहा है. तो ये सब कहीं ना कहीं रियलिटी से लिंक्ड है, कुछ परसेंट तो. एंड आइस एंड राइजिंग ग्लोबल एवरेज सी लेवल. और फिर नेचुरल सी बात है, जब आपके पोल्स पे चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, इवन हिमालय इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी थर्ड पोल, जिसपे कि बहुत सबसे ज्यादा बर्फ अगर है कहीं पोल्स के बाद तो वो हिमालय पे है. तो अगर ये भी इसी गति से पिघलता रहा तो एक ना एक दिन हाँ मतलब इट विल लीड टू आई मीन वेरी डेंजरस सिचुएशंस फॉर मैनकाइंड एंड फॉर लिविंग बीइंग्स. So this is what was pointed out in IPCC 2007. This is just to remind you कि global status क्या चल रहा है इस समय climate change का. अब ये देखो यहाँ पे एक और इस पिक्चर से आप और समझ पाओगे. अब जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनको मॉडल मीन्स मॉडल इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इक्वेशंस रिटन ऑन द कंप्यूटर, and then of course we give some real time values and then see what is happening in I mean in the future. सो द प्रोजेक्टेड सरफेस टेम्परेचर है, अगर हम बात करें कि अगर आज से हम 2020 में 80 इयर्स बाद एट द एंड ऑफ दिस 21st सेंचुरी अगर हम देखें कि 2099 में क्या होगा तापमान, तो आप इस मैप पे अपनी अपनी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा आज से 80 साल बाद. तो अब ये देखो आपके पोल्स पे सबसे ज्यादा, दिस इज योर कलर बार which is marked with the color codes, and if you see that this color is showing the highest temperature is around 8 degree Celsius, right? So 7.5 to 8 degree Celsius box if you see, तो पोल्स पे सबसे ज्यादा दिखा रहा है आपका, खासकर नॉर्थ पोल पे अगर हम देखें आर्कटिक पूरा जो है ये सबसे ज्यादा हीट महसूस करेगा, because these are very sensitive zones basically. Poles and Himalayas are basically more sensitive to the temperature or say the warming or the maximum temperatures. तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इन्हीं पे है, क्योंकि ट्रॉपिक्स में हम रहते हैं तो मोर और लेस साल भर पूरा रेडिएशन रहता ही है आपका. चाहे सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर में जाए तब भी उसको ऐसे घूमेगा ना, 23.5 डिग्री पे टिल्ट है तो सन ऐसे जाएगा. तो अगर ऐसे जा रहा है तो मोस्टली चाहे वो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तब भी उसको इधर से गुजरना ही इक्वेटर से गुजरेगा, तो मोस्ट ऑफ द रेडिएशन विल बी ऑन द. सो यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. यहाँ पे अगर आप देखो कि इक्वेटर यहाँ से गुजरती है लगभग लगभग इंडिया से 4 डिग्री नीचे अगर कहें हम, तो मोस्टली बीच में ये ओशंस हैं लैंड है. तो आप देख रहे हो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 डिग्री तक का
टेम्परेचर बढ़ सकता है। बट अगर आप हिमालय की बात करें, यहाँ पे आप देखो कि हिमालय में भी आपका ये यू कैन सी द कलर हेयर इज अराउंड 5 डिग्री। तो अगर यहाँ पे पोल्स पे 7-8 डिग्री बढ़ रहा है तो कम से कम 5 डिग्री तो हिमालय की रेंज में भी टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अगर 5 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, आप कहीं एसी से बाहर निकल के आओ और 5 डिग्री का डिफरेंस आपको फील होने लगे तो आपको लगेगा कितना मतलब बहुत गर्म है बाहर। या फिर आप हल्द्वानी से नैनीताल चढ़ जाओ तो वहां पे भी 5 से 6 डिग्री का फर्क रहता है कम से कम, तो आपको एकदम अच्छा लगता है कि हल्द्वानी में इतना गर्म था, नैनीताल आगे इतना ठंडा है। So these are the kind of situations that you can realize in your, in the present scenario. But then the projected temperature over the globes, you can see that every place, not even oceans or see the land regions or the mountain regions or the snow-covered pools, and not even a single place is left without, seeing the impact of this global warming. So this is a projection, global status you can see, and model projection. These are basically atmospheric oceanic global circulation models, AOGCM, which gives the projections for future scenario under different schemes, if you see. And these are uh, calculations or based on the observations used for predicting future in a sense, you can say. और इन्होंने बेसलाइन जो डेटा यूज किया है वो 80 से मीन्स 2000 तक आप कह सकते हैं कि 20 साल का डेटा यूज किया है। और अगर 20 साल पहले 1980 से 1999 तक ये सिचुएशन थी तो आगे 100 में क्या होने वाली है, तो ये प्रोजेक्शन है taking the current data into input. So this is now the schematic of our climate system. If you see, the climate system is not only one system, whether we take it a hydrosphere. Hydrosphere is basically rivers and lakes. Cryosphere is basically your all frozen water in the poles. And then atmosphere, you understand it very well. And then of course biosphere is nothing but which is consisting of all living things, whether it's a plant or human being or anything. So these are all sort of processes that in a climate system that a climate system includes. So how your ice ocean coupling is there, I mean, with the oceans which are in close contact with the ice at the poles, they also interact because of the exchange temperature, which is most important. Then of course ocean, the rise in the temperature of the oceans, they also change the winds, heat exchange all with the atmosphere, wind stress also, and all sort of precipitation is affected by change in the temperature in the oceans or land. So this is how ocean interacts with the sort of atmospheric air or atmosphere in contact. So these are the situations that we can imagine. Of course then human influences, you can see here a lot of things, that whatever source of energy on the surface of the earth is, I mean, whatever energy is coming is because of the sun. So sun is the only source of energy on the surface of the earth which illuminates at the same time, or say in the daytime, half of the planet earth, and gives it energy, and it responds that, and then in different ways, land, ocean, glaciers, everything, and all sort of the processes take in place in the presence of sun mostly. And the sun has been sort of applauded in one Rig Veda also, that Aditya Jayate Vrishti and Vrishti Dhanyam Tatha Praja. That's the sun is responsible for the rain, and if there is rain, it will make people happy. In a sense, like in terms of agriculture, all sort of activities which are depending upon the rain. So rain gives prosperity to the uh, earth, whether it is a vegetation or agriculture or anything related to the human activities. So this then volcanic eruption is also one part of the climate system, that if there is a volcanic eruption, it will emit a lot of sulfur dioxide into the atmosphere, and huge amount of aerosols in the atmosphere, and sometimes they penetrate the tropopause and reach up to the stratosphere and then live there for
quite a good time, and we call that the residency time, or the whatever survival time of these sort of gases or air particles there in the stratosphere. And then of course they will settle down at some point of time. So this is all about your climate system. Now if we talk about that, what are the solar radiation, and which I was telling that sun is responsible for all sort of energy on the surface of the sun. So as we discussed on the very first day, that sun is giving us wide spectrum of light. Sun is emitting all wavelengths as a result of fusion reactions in the core of the sun. So what happens? It will give you, starting from say electromagnetic spectra, radio waves, microwaves, infrared, visible, ultraviolet, X-ray, and gamma rays. All sort of emissions are. This is the entire electromagnetic spectrum. All sort of wavelengths are coming from the sun. But whatever radiation we are receiving at the surface of the Earth is visible, starting from 700 nanometer to 400 nanometer. So with your, what we call, we study in our school elementary level. Mm. So here you can see that this visible light basically is transparent to the larger extent to the atmosphere, and when it reaches on the surface of the Earth, it is absorbed by various objects in its own manner. For example, if there is a concrete building, it will absorb or reflect in a different way. It will warm faster. If there is a field having crops or vegetation, it will warm up slowly. So it means it is absorbing the radiation in a different pattern, and then slightly emitting slowly this outgoing long wave radiation. So whatever radiation is being absorbed by any material on the surface of the Earth, it increases its energy. And if we go to the basic physics, and the outermost electron will jump to the higher level and then come back to and emit some come while it come by taking some energy, it will go to the higher energy level, and while coming back to its original position, it will emit some radiation in a different wavelength. So that wavelength is basically, we call them outgoing long wave radiation, and that wavelength is generally infrared radiations. And this infrared radiation is responsible for warming anything on the surface of the Earth, or you can say that warming the atmosphere, increasing the molecule of air, increasing the kinetic energy of the air molecules. And this energy is in terms exchanged with uh, what we feel like heat, basically. So and then CO2, when we talk about the CO2, is the most abundant greenhouse gas, or most effective greenhouse gas, because it traps that outgoing long wave radiation and heats up the atmosphere. So that's why it has got such a great importance in the atmosphere, that it basically absorbs or traps all this most of this outgoing long wave radiation, and then exchange with the atmospheric composition, and increases the temperature of the air, basically a air molecule. So this is again the structure of the atmosphere that we have already discussed. Now if you see the global warming trends, starting from, say, this is again from IPCC up to 2012, they have updated it. So if you see, starting from 1961 to 1990s, of course, whatever trend we saw in the beginning, the trend is increasing. A CO2 trend is increasing, so temperature is increasing. But you can see one special difference here, that in the 70s and 80s, starting from 70s, this is 60s, 70, 80, particularly after this industrial era of 70s and 80s, if you see, this is 10-year average, that every 10 year there is a step, jump. Here you can see that these steps are sometime coming up and down. So then temperature, not every 10 year it is increasing, but sometime it is average. There is also average decrease of, say, zero point 0.1, 0.2 degree. But here if you see the anomaly means the positive anomaly is always temperature is rising, negative anomaly is temperature is decreasing. So if you see from mean temperature in 70s, 80s, 90s, until 2000,
10, if you see, every time in these last 4 decades, the temperatures are going up. There are always positive anomaly. And temperatures are mostly above zero. Anomaly means from mean temperature. For example, if the temperature at Pithoragarh was 15 degree, say in 2000, and by 2010 the temperature has become 15.6. So it means there is a positive anomaly of 6 degree, whereas you were expecting 15 degree, 0.6 degree Celsius, where you were expecting that temperature has average temperature has to be 15 degrees Celsius, but now it has become 15.6 degrees Celsius. So this is how we try to understand. So the point here is that the last 4 decades have been very, very warming, very have accelerated the warming of the atmosphere, basically, you can say. So these are some sort of global warming trends, we can say. Another, if now we come in the context of India, that was global warming trends. In Indian scenario, if you see that all India and annual surface temperature, if you see up to from 1900, 112 years. This is the data for 112 years that we have taken from IMD. This is also published in our book. If you see climate change in the Himalaya, that again, starting from say 1995 onwards, or in the decades of the 90s here, 90s, 2000 onwards, 2010, you can see the height of the towers and one-sided. So there is only positive temperature anomaly. Means Indian temperature in over India. This is these are the observations from more than 1,000 stations from India, all over India. So all collecting the data from all more than 1,000 stations from India, and then they averaged it for 100 years or whatever available from one place. Maybe at some places it is available for 100 years, at some places it is available for say last 40, 50 years. But then this average has been taken from all over the stations or the available data, and then presented on this map. You can see that after 90s there is mostly positive anomalies. Means after 90s temperatures are increasing very fast as compared to the previous year. Even if you see in the 80s also, there are the years when there are negative temperatures. Means temperatures are decreasing up to half a degree on an average. This is yearly average. In between, if you see, one bar belongs to basically one year. So there are years that ups and downs. I mean, positive anomaly as well as negative anomaly. Both are visible, or you can see in this plot if we talk before 90s. But after 90s, there are rarely in 1996 only you are able to see here the negative anomaly. Otherwise, most of the time temperatures are going up and up. Earlier it was half a degree, 0.25 degree, you can say, then half degree, and then 0.75 degrees. So by the end of 2012, if you see, some of the years have reached up to say around 1 degree Celsius rise in the temperature. And this is average. So average does not necessarily mean that if the temperature at Pithoragarh is increasing, say by 2 degree or 1 degree, at other places also it will be the same. Maybe at some places it is increasing by 3 degrees, some places it is increasing by zero point 0.5 degrees. So this is an average, but average 0.5 to 1 degree is very high. So maybe some places might be having 2 degree or 3 degree rise in temperature, which is quite significant. Similarly, if you see here, that rainfall also has decreased. These are drought years basically, जिसको हम बोलते हैं ना कि ये वाला सूखा वाला साल था. तो ड्राउट ईयर्स एंड फ्लड ईयर्स, कभी कभी बाढ़ भी आती है, तो ये दिखाए गए हैं यहाँ पे आपके जो सॉलिड बार्स हैं. दीज आर floods basically, and these cross bars are basically empty bars in between. These are drought, and these dotted bars are normal. So normal मतलब जो आपकी जो भी normal rainfall होती है, आपका annual average जो भी है 1500 2000 depending upon millimeter from place to place or even less than that. So हर जगह का अलग अलग होता है. बट ऑल इंडिया समर मानसून रेनफॉल की अगर हम बात करें, तो अब ये देखा, ये 306 स्टेशन का एवरेज है. ये आप देख रहे हो कि 2000 के बाद ये बीच बीच में जिस तरह से ड्राउट के ईयर दिखाई दे रहे हैं, 2000 के बाद ये भी काफी देखने को मिल रहे हैं लगातार.
तो जब तापमान बढ़ रहा है तो करस्पॉन्डिंगली सूखा भी बढ़ रहा है, ये कह सकते हैं आप इंडियन सिनेरियो की अगर हम बात करें। अब हम हिमालय के ऊपर आते हैं। तो हिमालय की अगर हम बात करें तो इवन कालिदास ऑल्सो हिमालय को उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। एंड यू कैन सी दैट he has also written that अस्यस्त्रस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा पर्वतो ये निधि व्याघ्य स्थित पृथिव्या मानदंड means in the north it stands, the Himalaya stands the king of the mountains, having a divine soul. Basically he has uh, considered it a divine soul, and it exists like a measuring rod of the earth. It's kind of a diameter of the earth, you can say, which extends from eastern to the western seas. आपके ईस्टर्न सीज में आप वे ऑफ बंगाल देख लीजिए, वहां से लेके और कहाँ वेस्टर्न सी आपका मेडिटेरियन सी तक, अगर कहीं वहां तक जाता है ये कनेक्टिंग माउंटेन सीरीज अगर हम कहें तो इस तरह इतना इन्होंने वर्णन इसका कहा है। एंड जैसा हमने शुरू में बताया कि हिमालय इज ऑल्सो इक्वली सेंसिटिव एज एज द पोल्स। जिस तरह से पोल सेंसिटिव है वैसे ही आपका हिमालय भी बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई भी थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है तो सबसे पहले प्रभाव हिमालय पे ही पड़ता है। और अब हमने हिमालय के ये सारे प्रभाव देखने के लिए वेस्टर्न हिमालय को चुना है, क्योंकि वेस्टर्न जो भी जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है वो और हाई लेटीट्यूड्स पे है और हायर ऑल्टीट्यूड्स भी हैं। तो अगर वहाँ की हम बात करें तो उसको लिया है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सारे उधर से आते हैं, ज्यादा बर्फबारी उधर ही होती है। तो जो अपर रीचेज ऑफ वेस्टर्न हिमालय है तो उसके ऊपर हमने कुछ स्टडी की है। एंड आई वुड लाइक टू शो यू कि कितना सेंसिटिव है वो। तो अगर हम वेस्टर्न हिमालय के ऊपर देखें तो यही अगर फिर से 90s और 90s के बाद की बात करें तो आप देख सकते हो कि पहले तो आपका बहुत फ्लक्चुएशन है, मैक्सिमम टेम्परेचर में भी कभी नीचे आ रहा है, एवरेज टेम्परेचर साल का कभी ऊपर नीचे ऊपर। सो देर आर पॉसिबिलिटीज की ठीक है किसी साल ज्यादा गर्म हो गया तो ठंडा भी हुआ है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि नीचे बहुत कम आ रहा है, ऊपर जा रहा है तो बहुत ज्यादा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? और 31 ईयर्स का स्लाइडिंग भी 30-30 साल का एवरेज, 31 साल का एवरेज करके देखा है, तो भी आप देखोगे कि यहाँ पे लगातार बढ़ता ही जा रहा है 90s 80s के बाद। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। वी कैन से कि हिमालय के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है कि अगर जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो हिमालय सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। दूसरी बात ये स्टैंडर्ड डिविएशन भी आप अगर देखोगे, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में स्टैंडर्ड डिविएशन में अलग अलग 30-30 सालों के अंतर पे अगर आप देखते हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब कि हम जो मीन एक्सपेक्ट करते हैं उससे कितना इधर उधर है वो स्टैंडर्ड डिविएशन आप हो जाता है। सिंपल स्टैटिस्टिक्स में जो हम पढ़ते हैं वही बात यहाँ पे भी है। तो आप देख रहे हैं कि जून यानी जनवरी फरवरी और दिसंबर सर्दियों में स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है, मिनिमम में भी और मैक्सिमम में भी। अगर आप देखोगे ये यहाँ पर ये आपका है मैक्सिमम में तो चलो फरवरी तक ठीक है, मतलब फरवरी दिसंबर जनवरी और फरवरी। बाकी में स्टैंडर्ड डिविएशन लगभग लगभग सेम ही, मार्च अप्रैल मई देखो, जून जुलाई अगस्त में तो बहुत कम है क्योंकि मानसून होता है। बट सर्दियों का जो टेम्परेचर है मेनली हिमालय अफेक्ट कब होता है? जब आपका विंटर टेम्परेचर ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। विंटर टेम्परेचर डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी बर्फबारी आप देख रहे हो कि उतनी अ, उस लेवल की नहीं होती कि जैसे पहले आप लोग कहते हैं कि लगातार 3-3 दिन तक बर्फ ही गिरती रहती थी, लेकिन आपको अभी देखो कि पिछली बार 12-13 बार बर्फ गिरी है, लेकिन कभी भी इतनी बर्फ नहीं गिरी कि वो लगातार 2-3 दिन तक बर्फ हो रही है और बहुत अच्छी खासी बर्फ जमा हो जाए पहाड़ों पे, ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो ये सारे जो भी आपके टेम्परेचर डिस्टर्ब हुए हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, कि आपका देखो स्टैंडर्ड डिविएशन मैक्सिमम टेम्परेचर, जो मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में माना 18 रहता था उसमें 3-3 डिग्री तक का अंतर आ रहा है, जबकि सर्दियों में टेम्परेचर मैक्सिमम में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए मीन से। बट डेविएशन, तो डेविएशन मींस अगर एक सडन बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है आपके अपर अपर एंड लोअर टेम्परेचर्स में, मिनिमम और मैक्सिमम में, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपका आपके लिए एक बहुत सीरियस सिचुएशन है। और जो कि अगर आप देखें कि प्लांटेशन है या जो भी वेजिटेशन है माउंटेन्स का, बायोडाइवर्सिटी है, उनके लिए तो 2-3 डिग्री सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। 2-3 डिग्री में तो बहुत सारी स्पीसीज को खतरा आ जाता है। तो ये सारी चीजें मतलब एक चिंता का विषय है इफ यू टॉक अबाउट हिमालयन रीजन। सो नाउ अनदर सिचुएशन इफ यू सी हियर कि आप बारिश में भी अगर अगर देखें सरफेस टेम्परेचर एनोमली और स्टैंडर्डाइज रेनफॉल, तो जैसा भी ये तो एक जनरल था इंडिया के ऊपर था, लेकिन हिमालय के ऊपर भी वही सिचुएशन है कि आपका जो स्टैंडर्डाइज रेनफॉल है उसमें भी
नेगेटिव अनोमली है, मतलब आपकी घट रही है बारिश का जो दर है। और दूसरी एक बात और इम्पोर्टेंट है कि हिमालय के ऊपर अगर आप इन जनरल देखो, हिमालय देखो या इंडियन सिनेरियो में भी, कि आपका जो रेनी डेज है वो कम हो रहे हैं। मतलब बारिश भले ही आपकी 1000 मिलीमीटर हो जाए, लेकिन 1 घंटे में इतनी बारिश हो जा रही है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं। एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स हैज बूस्टेड अप, एंड if it is raining, the total amount of rain may be same over the year, but then the rainy days have decreased, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपकी 100 मिलीमीटर बारिश 120 दिन हो, लगातार हो, थोड़ी थोड़ी हो, तो वो ज्यादा यूजफुल है एनवायरनमेंट के लिए, वेजिटेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। बजाय कि एक ही दिन में बहुत सारी बारिश हो गई, सब बह गया, फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई, or it creates sort of devastation, and as I discussed yesterday, that sometimes it leads to the situation of these cloudburst kind of situations. So this is surface temperature anomaly. As I said that Himalaya central, ये सेंट्रल हिमालय के ऊपर की बात है। सेंट्रल हिमालय, मुक्तेश्वर वगैरह, इनका डेटा कुछ हमारे पास है। मसूरी, मुक्तेश्वर, तो ये उसका एनालिसिस किया है। तो उस पे आप देखो कि यहाँ पे भी आप कंसिस्टेंटली, अगर ये जीरो लाइन है, positive anomaly upside, negative anomaly below zero. So you can see that after 20s or after 2000, in 10 years, it is significantly up. Half a degree anomaly you can see here. तो ये सारी चीजें बड़ी means these are the matters to be taken on urgent basis, or considerable things needs attention actually. Second thing, if you see, sorry, yeah, so this is actually the projections. As I told you that यहाँ पे भी हमारा ये वेस्टर्न हिमालय का रीजन है। ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है, बेस लाइन टेम्परेचर लिया हुआ है 30 इयर्स का, और डिफरेंट सिनेरियो में उसको विंटर के लिए ये एक्चुअल टेम्परेचर है। इसमें से अगर आप प्रोजेक्टेड है, इसमें से ये प्रोजेक्टेड टेम्परेचर है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। तो इसमें से अगर आप इसको घटा देंगे तो ये देख लो पूरा येलो हो जा रहा है। येलो होने का मतलब आपका है कि 4 से 5 डिग्री तो हिमालय पे सभी जगह बढ़ रहा है, और कुछ कुछ पैचेज में आप देख रहे हो कि 6 डिग्री तक, 8 डिग्री तक भी टेम्परेचर प्रोजेक्टेड है। तो ये सब बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है जो कि आप प्रोजेक्शंस देख रहे हैं। अब ये मुक्तेश्वर का डेटा आप देखोगे, यहाँ पे आपकी मुक्तेश्वर में मैक्सिमम टेम्परेचर जो सर्दियों में रहता है, 1901 से 2012 तक प्लॉट किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे कि 1900 में, लगभग 1900, इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, आप मुक्तेश्वर का जो टेम्परेचर है वो, अगर हम इसको एवरेज मान लें, तो 10 से 12 के बीच में कहीं रहेगा, क्योंकि 12 से सब नीचे ही है, तो एवरेज टेम्परेचर 12 तो हो नहीं सकता। तो ये 10 से 12 के बीच में अगर हम माने कि ये सीधी लाइन 1 इंच है, तो उस दौरान 11। लेकिन टेम्परेचर देखो ट्रेंड क्या दिखा रहा है, इंक्रीजिंग दिखा रहा है, कि अब 1900 से सर्दियों का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कहाँ तक पहुंच गया है, 16 डिग्री सेल्सियस तक। ये 2005 का है। अब 16, 14, 15, 15.5, इस तरह, इतना इस लेवल तक पहुंच गया है, जो कि अगर एवरेज टेम्परेचर है तो कहीं 10 से तो 5-6 डिग्री, 100, ये कह लो आपकी 100 साल में 5-6 डिग्री तो बढ़ ही गया है मुक्तेश्वर का भी। सो दिस इज एन इंडिकेटर बेसिकली, जो कि आपका लगभग लगभग 2300 मीटर मीन सी लेवल से है। तो सर्दियों में टेम्परेचर बढ़ना ज्यादा खतरनाक है बजाय गर्मियों की, क्योंकि सर्दियों में आपका माउंटेन्स आर बेसिकली रिसीविंग मोस्ट ऑफ द rains in the form of say ice or snow, which is good for sustaining the Himalayan mountains, Himalayan ecology, or Himalayan ecosystem in general. So if it is getting affected, then definitely time is going to be अलार्मिंग इन द फ्यूचर। अब हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन हमने और किए हैं नैनीताल से, एक कुछ लिडार से ऑब्जर्वेशंस किए हैं। और अगर हम कहें, दिस इज अ फोटोग्राफ विच आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम वन ऑफ द फेमस फोटोग्राफर फ्रॉम नैनीताल, अनूप शाह जी, who has been awarded पद्मश्री also। तो ये उनके खुद की ली हुई फोटोग्राफ्स हैं, पिंडारी ग्लेशियर्स और काफी सारे, ये धर्मा वैली की है ये शायद। तो इस तरह दिखता है। लेकिन अभी आप देखो तो इतना हेजी रहता है, इतना पोल्यूशन आने लग गया है समर में अलग और विंटर में अलग टाइप का, कि इतने क्लीन माउंटेन दिखते नहीं है। तो उसको समझने के लिए हमने कहा, जब भी ये एक प्लॉट है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है एरोनेट उसको हम बोलते हैं, उससे अगर आप कहीं मेजरमेंट लोगे तो यहाँ वो दो टाइप की कर्व देगा एक साथ, दो टाइप के कर्व देगा। तो इसमें आपका जो मतलब बाई मॉडल स्ट्रक्चर देगा। कर्व तो एक ही आप देखोगे कि इसमें दो जितने भी एरोसोल, अगर हम कहेंगे, जो एरोसोल्स आर बेसिकली
सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रॉम 0.001 माइक्रोन टू से मोर देन 10 माइक्रोन साइज के। तो वो एक साथ ही रहते हैं। आप कोई भी डस्ट उड़ती है या कोई पोल्यूशन क्रिएट होता है इंडस्ट्री से, गाड़ियों से, कुछ भी किसी भी टाइप का, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि वो दोनों रहेंगे, उसमें छोटे साइज के भी रहेंगे, बड़े साइज के भी। तो अगर आप गर्मियों में देखोगे, गर्मी का प्लॉट है, मार्च का है, जब हम कहेंगे कि चलो समर स्टार्ट हो गया, जस्ट आफ्टर द, और स्प्रिंग यू कैन से, कि स्प्रिंग सीजन में भी अगर आप देखोगे तो ये बड़े वाले डस्ट टाइप चीजें उठने लगती है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, तो उस समय इसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। सर्दियों में आप देखोगे कि बड़े वाले कम रहते हैं लेकिन छोटे वाले ज्यादा रहते हैं, जैसे जो आग लगने से बनते हैं पार्टिकल, वो सारे ज्यादा होते हैं पहाड़ों पे। तो अब इसका असर हमने अध्ययन करके देखा है, वी स्टडीड दिस। तो विंटर टाइम में हमने ऑब्जर्वेशन किए। देखो विंटर में क्या होता है, आप नीचे देखोगे ये कोहरा दिखता है, सैटेलाइट का पिक्चर है, ये इंडो गैंगेटिक प्लेन है, पूरा ऐसे दिख जाता है ऊपर से। हालांकि पहाड़ों पे अच्छी धूप निकलती है, ये सब रहता है, बट ये क्या है, ये स्मॉग है बेसिकली, जिसको हम फॉग बोलते हैं। इसमें पोल्यूशन है प्लस वाटर ड्रॉपलेट्स है, सारा पोल्यूशन नीचे सेटल होता है। तो उस टाइम पे भी कुछ पोल्यूशन ऐसा होता है, बहुत हल्के पार्टिकल होते हैं, जैसे आग लगा दी जंगलों में, या फिर जैसे इधर पंजाब हरियाणा में वो जलाते हैं, पराली जलाते हैं, तो उस टाइम पे जो भी आता है उससे दो चीजें निकलती है। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है बहुत मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में, और दूसरे बहुत छोटे छोटे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। ये दोनों जो निकलते हैं तो ये धीरे धीरे माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, जैसे हमने कहा ना, अप स्लोप विंड के साथ सुबह धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, तो ये माउंटेन तक आ जाते हैं पहाड़ों पे। तो एक प्रभाव इसका ये होता है। ये आप देखोगे, ये हमने एक एनालिसिस किया है 2011 का है ये, 10 दिन का, जब मतलब सबसे ज्यादा पराली जलाते हैं। तो जो लाल डॉट है, लाल डॉट का मतलब ये पंजाब हरियाणा वाले किसान जो भी पराली जलाते हैं, ये वो आग है, सेटेलाइट से पकड़ी हुई है, फॉरेस्ट फायर, वो क्रॉप रेसिडुअल बर्निंग है ये फिर सैटेलाइट पिक्चर से, वो मोडी से था, ये आपका फिर एक कैलिप्सो सैटेलाइट से भी हमने देखा गया है इस तरह की सिचुएशन। आप ये हाई कंसंट्रेशन दिख रहा है इसमें, कि कुछ ना कुछ जला है और उसकी वजह से जो भी प्रोड्यूस हुआ है एरोसोल है एटमॉस्फेयर में। फिर हमने किया ये बहुत 5 सालों के लिए एनालिसिस, तो यही पाया गया कि हम बहुत आग लगाते हैं ये, अ, मतलब पराली जलाते हैं काफी नवंबर में, मतलब अर्ली नवंबर में जैसे ही धान निकलते हैं तो उसके बाद ये जलाते हैं। तो ये आग का वो है एनालिसिस। और उस आग से आप देखो जिस साल ज्यादा है तो नवंबर 2014 में सबसे ज्यादा थी, तो यहाँ आप देखो कितना इमिशन हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये आप 3.5 इंटू 10 -9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इतना मतलब ये रेट है, इस रेट से वहां पे इमिशन होता है जब आग लगती है। तो उस साल ये मतलब अगर हम एनालिसिस करें कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं उसके, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मोक प्लूम्स, जो स्मोक धुएं के वो आपके प्लूम्स है वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, एरोसोल लोड कर देती है हिमालय के ऊपर, विजिबिलिटी कम हो जाती है, क्लाउड्स नहीं बनने देते हैं, बहुत तरह की चीजें प्रभावित करते हैं। और ग्रीन हाउस गैस तो बढ़ती है साथ में, इसके साथ साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जिसका कि रेजिडेंस टाइम 2 महीने तक वो एटमोसफेयर रहती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और बहुत नुकसान पहुंचाती है कई तरह से हेल्थ के। एयर क्वालिटी को कम करती है, और ग्लेशियर्स मेल्टिंग में भी कहीं ना कहीं हेल्प करती है अगर वहां तक पहुंच गए। अभी गर्मियों में ऑब्जर्वेशन किए, जब हमारे पास तो वो आते हैं थंडर स्टॉर्म, वो डस्ट स्टॉर्म, डस्ट उड़ के आती है, तो ये हमने लिडार से ऑब्जर्व किया है। देख रहे हो आप 2 किलोमीटर पे एक एक लेयर दिख रही है। तो ये लेयर दिखने का मतलब क्या है, 2 किलोमीटर पे सीधे ऊपर कहाँ से पहुंच गया, यहाँ से तो गया नहीं, यहाँ पे ना हमारे पास डस्ट है हिमालय में, न डेजर्ट है, तो ये आता है बहुत दूर से, आता है नॉर्थ अफ्रीकन रीजन से आता है कई बार ये डस्ट। और ये चलती रहती है, ये पहले एक बार जब बहुत डेजर्ट गर्म हो जाते हैं तो ऊपर उड़ जाती है, थोड़ी सी भी हवा चली तो ये ऊपर उड़ जाती है डस्ट, और काफी ऊपर उड़ती है, 2-2.5 किलोमीटर तक चली जाती है। और फिर 2-2.5 किलोमीटर पे हवाएं क्या है, पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है, तो उनके साथ ही हिमालय की तरफ चलने लग जाते हैं। और जब ये हिमालय की तरफ आती है डस्ट, ये देखो ये आपका ये नॉर्थ अफ्रीका का सारान डेजर्ट है, और ये अरेबियन जितने भी डेजर्ट हैं अरब कंट्रीज के, या हमारे राजस्थान वगैरह का भी इसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ये सब जगह से डस्ट उड़ उड़ के ये ट्रैक से आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाती है हिमालय के ऊपर। और जब ये हिमालय के ऊपर बैठती है तो क्या करती है ये हमने एक मार्च 2012 में सबसे ज्यादा डस्ट स्टॉर्म आए थे, तो उस समय एनालिसिस किया, ये देखो ये सबसे ज्यादा डस्ट आई, तो उस साल आपका जो है, जो स्नो डेप्थ कवर है ग्लेशिएटेड सरफेस के ऊपर वो भी घटा है, मतलब ये आपका स्नो डेप्थ ग्लेशिएटेड सरफेस कम हुआ है। ये कम से मतलब है इसका कितना घटा है, 0.8 तक। तो जिस साल ज्यादा डस्ट आती है उस साल जो है ग्लेशियर्स भी बहुत तेजी से पिघलते हैं, ये कहने का मतलब है। अब ये देखो एक पिक्चर यहाँ आप देख सकते हो कि करीब हमारे पास 60 साल का डेटा है, इसमें हमने सारे ग्लेशियर्स का
रिकॉर्ड किया है, जैसे ये 39 ईयर का एवरेज है, तो ये 39 में हर साल लगभग लगभग 25 मीटर घट रहा है। ये बंदर पूंछ है, जौंदार बामक है, जज्जू बामक है, गंगोत्री ग्लेशियर्स आप देखो, ये भी 19 के करीब करीब जो है हर साल पीछे चला जाता है, 19 मीटर। भागीर ये है आपका भृगुपंथ, तो ये 16 है। तो जितने पिंडारी ग्लेशियर आप देखो, ये भी 15 मीटर हर साल पीछे चला जाता है। तो इतना प्रभाव पड़ रहा है सब चीजों को मिला के, जितना भी प्रदूषण हो रहा है या मैन मेड है मेनली, तो या ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से जो भी तापमान बढ़ रहा है वो सारा प्रभाव डाल रहे हैं कहाँ पर, ग्लेशियर्स पर भी। तो मेरे ख्याल से आई आई नीड टू स्टॉप हियर। So that's all from my side today. And of course, I am always open to discuss, talk with the students or the people who are really interested to work. And definitely, I'll be very soon approaching to Simant College for installing one instrument for particulate matter, for the measurement of the particulate matter PM 2.5. So thank you for listening me patiently. So now session is open for questions. Thank you. Hello, ma'am. Hello. Is anybody able to listen me? Yes, sir. So I am done with my lecture. So now it is Okay, open sir. for the questions. Yeah. Okay, okay. If there is any query, the participant side, kindly put these queries in the chat section, please. Any queries? No queries, sir. If I think net connection is not okay. Yes, sir. Okay, sir. So fine. We can conclude the session now. We conclude the session now. There is network issue. Okay, so I think because of some network issues, we are unable to connect to the speaker. So, if meanwhile, if you have any questions, kindly put them in the chat box. We'll take those queries later. Okay, thank you so much. Our next session will start after lunch at 2:30 p.m. Sharp. We'll resume at 2:30. Thank you so much.